और देखिए एससीओ बैठक में एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए एक बार। 13 socio-cultural events. Dear colleagues, as a result of the COVID-19 pandemic and geopolitical upheavals, the world is today facing a multitude of challenges. These events have disrupted global supply chains, leading to serious impact on the supply of energy, food, and fertilizers, and cascading effects on developing nations. These crises have also exposed a credibility and trust deficit in the ability of global institutions to manage challenges in a timely and efficient manner. These challenges, however, are also an opportunity for member states of the SCO to collaborate and address them collectively. With more than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. India has always stood for multilateral approaches to addressing global challenges and has always been a willing partner in sharing our expertise and experience. In this regard, India's own achievement in the field of startups and innovation is a remarkable journey. Today, there are more than 70,000 startups in India, of which more than 100 are unicorns. We stand ready to share our experience with member states. Colleagues, in this context, I would like to express my gratitude to all of you for supporting India's proposal of creation of 2 new working groups on startups and innovation and on traditional medicines last year. I'm happy to note that the regulations to operationalize these working groups have been approved by member states. Excellencies, SCO is in its 3rd decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I'm pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of member states for the long-standing demand of India to make English as the 3rd official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking member states of the SCO and will take the work of this organization to a wider global audience. I'm happy to note that the progress on ongoing process for the admission of Iran and Belarus as full members of the SCO. I thank the Secretariat for their efforts in that direction. Similarly, I'm delighted that 4 new dialogue partners will sign the MOU for their association with SCO today in Goa. We welcome our new dialogue partners and hope to intensify engagement with them in the SCO format. Excellencies, India has proposed a New Delhi declaration as an SCO summit declaration and 4 other thematic joint statements on cooperation in de-radicalization strategies, promotion of millets,
sustainable lifestyles to address climate change, and digital transformation. I seek your support in timely finalization of these documents for approval by our leaders at the SCO summit. I'm confident that today's meeting would lead to fruitful discussions which would help in sustaining the momentum of our cooperation. I once again wholeheartedly thank you all for your support for the first ever SCO presidency of India, and I sincerely hope that we can get together to make the SCO Heads of State Summit meeting a great success. Thank you. With that, may I now request our friends from the media to please leave the meeting hall so that the proceedings can thereafter continue. देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद से मुकाबला ही हमारी प्राथमिकता है। आतंक फंडिंग पर एस जयशंकर ने खरी भी सुना दी और आतंकवाद से मुकाबला हमारी प्राथमिकता है। आतंकवाद पर मजबूती के साथ उन्होंने बात की। अमित मिश्रा हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से। अमित जी का सीधे रुख करेंगे। अमित जी, पहले से ही यह तय माना जा रहा था कि आतंकवाद के विषय पर वो खरी सुनाने वाले हैं, पाकिस्तान और चीन को तो बड़ा संदेश देने वाले हैं, और शुरुआत वही हुई। बिल्कुल, और एससीओ का जो संविधान है उस संविधान में ही आतंकवाद एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर देखा जाता है। और आज विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस वार्ता जो अभी चल ही रही है उसमें साफ तौर पर उन्होंने इंगित किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो अब बर्दाश्त नहीं होगा, और इसमें एससीओ के देश जो है वो एक सहमति बनाए और एक सुर से बोले। यानी अगर कहीं से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किसी दूसरे मुल्क में चल रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी एससीओ के देशों की है जो यहां बैठक में शामिल हैं। दूसरी तरफ वाणिज्य और व्यवसाय को लेकर भी जो बातें कही है एस जयशंकर के ने, वो भी काफी तरीके से बहुत बेहतरी की बात है। और एससीओ के जो देश हैं, आपने देखा बेलारूस का भी जिक्र उन्होंने किया, जो बेलारूस सदस्य होते बाहरी सदस्य है, और उसका स्वागत भी किया। तो एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को एक तरीके से ये समझाने की भी कोशिश की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फंडिंग है, आतंक को लेकर जो फंडिंग चल रही है उस फंडिंग पर लगाम लगाया जाए। क्योंकि अभी इसी वक्त दिल्ली में चीनी दूतावास में पाकिस्तान और चीन के अधिकारी बैठक कर रहे हैं, तो ये चौथी बैठक है। तो इसकी बात की जो तस्दीक थी वो भी जयशंकर ने वाकई कर दी, और वो तब की जब दोनों विदेश मंत्री भारत में हैं, बिलावल भुट्टो भी भारत में हैं और चीनी विदेश मंत्री भी भारत में हैं, एससीओ की बैठक में गोवा में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में एस जयशंकर ने काफी खरी भारत का पक्ष रखा है, लेकिन ये भी किया है, कहा है कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन होगा जिसमें तमाम मुल्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष एससीओ के जुटेंगे, वो बड़ी चीज होगी उसमें।